When I started my trading journey, like you, I also started trading support, resistance, trend line. But so like you, I was also facing so many problems trading support, resistance and trend line. So some example I want to show you first. One of the major problem I was facing कि ये support में मैं body to body zone मार करूँ और wick to wick मार करूँ और body से लेके wick तक मैं एक zone मार करूँ. So let's take a long position because market is holding this support area. Let's take long here. Now, the second problem I was facing, where should I put my stop loss? Should I put my stop loss below this wick or below this low? If I'll put my stop loss below this low, then it is going to be very wide stop loss. And if we target this highs, then it will give me very bad risk reward trade, right? So let's put my stop below the wick here, right? सो हम लोग सीखे हैं ये सपोर्ट अगर ब्रेक कर गया हो तो ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा इन रिटेल ट्रेडिंग स्टाइल, राइट? सो वी विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन हियर and this happened with me over and over and over and over again, and I noticed maximum time market hit my stop loss then reversed to my initial direction. And here SMC smart money concept comes in. Now let's understand how SMC traders trade. If we talk about basic support resistance trading, अगर मार्केट एक प्राइस रेंज से 2-3 बार बाउंस करता है तो हम लोग इस रेंज को सपोर्ट एरिया बोलते हैं, राइट? एंड फिर हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट एरिया में वापस थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम ट्रेड करे, सो वी कैन ओपन बाय पोजिशन. सो अब इस एरिया में काफ़ी सारा लॉन्ग पोजीशन ओपन हुआ होगा, राइट? बट बैंक्स इंस्टीट्यूशन डोंट ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन. ओके, सो बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए ये एरिया एक लिक्विडिटी है, राइट? क्योंकि अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया से नीचे अगर ट्रेड करेगा तो जितने भी लोग इस एरिया में अपना लॉन्ग पोजीशन और बाय पोजीशन ओपन किए होंगे सब लॉस में होंगे अगर मार्केट इस एरिया से नीचे ट्रेड करेगा तो, राइट? सो दैट्स इज लिक्विडिटी, उसी को हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब करना बोलते हैं. तो यू विल सी सम टाइम मार्केट ट्रेड थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करता है हम लोग के सपोर्ट एरिया से एंड फिर वेरी स्ट्रॉन्ग शार्प मूव होता है डाउन साइड, एंड जितने भी लोग उस सपोर्ट एरिया पे अपना बाई पोजिशन ओपन किए होंगे सब लिक्विडेट हो जाते हैं या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड देन मार्केट रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन और सम टाइम वो नीचे ही ट्रेड करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेयर लिक्विडिटी रेस्ट. above equal high, below equal low or support, trend line, below swing low and above swing high. And also liquidity rest above previous day high low, previous week high low and previous month high low. Now let's discuss where you should focus now. So go to your chart, go to any pair you trade and see how many times market disrespect the resistance. For example, here you can see resistance, market grabbed liquidity and reverse. Here you can see one more example, support area, market grab liquidity and reverse. One more example I am showing. So this is trend line support, right? मार्केट ग्रैप लिक्विडिटी, जितने भी लोग इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मान के बाय ले रहे होंगे, मार्केट ग्रैप का लिक्विडिटी एंड रिवर्स. सो गो टू योर चार्ट, डू प्रैक्टिस एंड सी हाउ मेनी टाइम दिस थिंग हैपन. Now last I want to discuss the importance of understanding liquidity. Understanding where liquidity is in the market is important because it allows us to know which side of the market is being targeted. Let me show you one example. So let's say market structure is bullish because it is creating higher high, higher low, higher high, right? We are in uptrend.
So here you can see we have equal high, right? We have equal high here. And let's say, for example, when market traded from this low to this high, we have this institutional reference point, okay? And we have liquidity resting above this high, okay? Market traded lower to our institutional reference point. So if we take a long position here, we can target this equal high क्योंकि ये liquidity अभी तक untap है, right? When we have clean liquidity with framework, it gives us a clear potential direction target. Let me show you one more example. So here you can see we have equal high liquidity untap, right? And let's say we have change of character, okay? Market shifted from downtrend to uptrend. And let's say market traded lower and we have this trend line liquidity. Market grabbed this trend line liquidity and bounce from our demand zone. So if we take long position here, we can target this equal high. Here one example. So we have this change of character because this was the last high that created this low. This low broke previous high and created new high. Okay, and you can see we have this equal high. That means we have liquidity resting above this equal high. And you can see this trend line liquidity. Market grabbed this trend line liquidity, tapped to our demand zone, and you can see how market bounced from our demand zone and grabbed this equal high liquidity. So I hope सबको clear हो गया होगा कि liquidity क्या होता है. Okay, and it's very important to know where liquidity is resting क्योंकि उस set target करके तुम एक अच्छा move capture कर सकते हो. Okay, and thank you guys for watching this video. See you on next video. Take care, stay safe and stay profitable.